takes longer to fill or drain than a small tub of smaller diameter. Okay, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना टब की, अगर बड़ा टब है तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा फिल करने में. Similarly, larger capacitor takes longer to charge or discharge. पढ़ा हुआ है ना ये सब? Than a small capacitor. Okay? टब जहाँ पर है वहाँ यहाँ इधर है कैपेसिटर. ओके, फिलिंग विद वाटर या फिर फिलिंग विद चार्ज. ओके, अच्छा, अभी एक चीज ध्यान में रखना. वी से Q इज इक्वल टू CV और C is equal to Q by V. Now, can anyone tell me on what factors does C depend? Ma'am, dimension. Very good. Very good. Here, C is only a proportionality constant. Okay? The value of charge will depend on C for a given voltage. Okay? How much charge is stored for a given voltage will be determined by the capacity C. Okay? C does not depend on Q or V. Okay? C is equal to epsilon A by D. Okay? Where A is the surface area of each plate. D is the distance between the plates. जब मैं ये लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, I mean parallel plate capacitor. And epsilon is the permittivity of the dielectric material. ये सब पढ़ा हुआ है ना? Yes. Between the plates. Hence, the factors that determine the value of the capacitance are area, distance between the plates, and the permittivity of the dielectric material which is present between the two plates. Okay? अब इस इक्वेशन को हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई? एक Q is equal to CV आ गया, और एक I is equal to C dV by dt. Okay? Now if we integrate this equation, we get a relation between V and I. Integrating we get Vt is equal to
1 upon c minus infinity to t. आई टी डैश लिखना है तो टी डैश लिख दो क्योंकि मैंने यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी टी, और वी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी, टी नॉट इज अ टाइम जब मैं शुरू कर रही हूँ, टी नॉट टू टी आई टी डी टी प्लस वी टी नॉट, where V naught is the voltage across the capacitor at time t is equal to t naught. Actually जब मेरे पास कैपेसिटर आया वो प्रीवियसली चार्ज हो सकता है ना, चार्ज होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी होगी. ओके, सो where V T naught is equal to Q T naught by C, which is equal to the voltage across the capacitor at time t naught. So this equation shows that capacitor voltage depends on the past history of the capacitor current. Hence, the capacitor has memory. This equation shows that the capacitor voltage depends on the past history of the capacitor. Correct. Hence, capacitor has memory. इसके कारण इसकी बहुत यूजफुलनेस है. ओके ओके, now we'll talk about the instantaneous power delivered to the capacitor. Instantaneous okay, VI. So I is C dV by dt. So this becomes V C dV by dt. That is CV dV by dt. Okay. Or energy stored in the capacitor is integral of this. माइनस इन्फिनिटी से लेके टी तक पी टी टी टी, दैट इज सी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी डी वी बाई डी टी डी टी. ओके, दैट इज इक्वल टू सी. मैं कहीं गलती करूंगी तो बता देना. ओके, वी एट t is equal to minus infinity
2V at time t. V dV. That is equal to C V square by 2. Okay. V at time t is equal to infinity. 2V at time t is equal to t. Okay. Now, initially, the capacitor is discharged. So V at t is equal to minus infinity is equal to 0. V at minus infinity is equal to 0. Therefore, energy stored in the capacitor W is equal to half CV square. Now, Q is equal to CV. Therefore, W is equal to Q square by 2C. ये सब आपको आता है ना? Yes, ma'am. Good. Any difficulties to anyone till now? Say no, ma'am. No, ma'am. Okay, good. So these two equations, represent the energy stored in the electric field that exists between the plates of the capacitors. And this energy can be retrieved since the capacitor is ideal, and it can ideal capacitor cannot dissipate energy. Okay, resistances will dissipate all energy, but ideal capacitor cannot dissipate energy. Okay, in fact, the word capacitor is derived from this element's capacity to store energy in an electric field. Okay, तो जब चार्ज होता है तो इट स्टोर्स, और जब डिस्चार्ज करना होता है तो इट gives away its energy. Okay, so now from this simple equation we'll talk about the properties of a capacitor. हमारी इक्वेशन क्या है? I is equal to C dV by dt. So from this equation, okay, if the capacitor is not charging, if it is not changing with time, then if the voltage is not changing with time, that is dV by dt is equal to 0, then current is 0. Yes, ma'am. ठीक है? So if and what does that mean? When voltage is not changing with time, when it is a DC voltage. Okay, so that means for DC voltage,
dV by dt is equal to 0. Therefore, I is equal to 0. So the first property kya hai? It says that the capacitor is an open circuit to DC. Right? ये बहुत important property है. You will use it when you are using the capacitor as a blocking capacitor, etc., etc. Okay? This property of capacitor is very helpful to us people who are designing circuits. However, if a battery is connected across a capacitor, the capacitor charges. वो तो पता है ना? Okay, वो transient current flow करता है and current is continuous because of the displacement current. We'll not discuss that. Okay. दूसरी property है कि if I is equal to C dV by dt, now if the voltage changes abruptly, then the current would be infinite. The current can never be infinite. Therefore, voltage across the capacitor cannot change abruptly. So the second is the voltage on a capacitor cannot change abruptly. That is, voltage on the capacitor must be continuous. It should change continuously. It cannot change abruptly. That is, अगर आपका across a capacitor V versus T है, it can change like this. It can discharge like this. Okay? But allowed. But the voltage across a capacitor cannot have such a behavior. This is not allowed. Okay? ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए you need infinite current. Okay? And that is not there. However, remember, current can change instantaneously. Okay? But voltage across a capacitor cannot change instantaneously. आप ये कह सकते हो ना कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम लगेगा, तो चार्ज टाइम लेगा तो वोल्टेज टाइम लेगी, तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता. ओके? अच्छा, अभी तीसरा है the ideal capacitor does not dissipate energy. It takes power from the circuit when storing energy in its field and returns previously stored energy when delivering power to the circuit. Okay? So, okay. Fourth is, if it is a real capacitor, practical capacitor,
उसका सर्किट मॉडल क्या होएगा? कुछ लीक हो जाएगा चार्ज, ओके, पड़ा पड़ा थोड़ा सा लीक हो जाएगा, even if you don't give any path to it, okay, but this leakage तो इसका जो equivalent model बनेगा, it will be like this, C in parallel with resistor. लेकिन ये जो resistor है, its resistance can be as high as 100 mega ohm, okay, and therefore for all practical purposes we can neglect it and we can safely assume ideal capacitors, okay. Now we'll do series and parallel capacitors. सब आता है ना तुम्हें? Yes, ma'am. स्किप कर जाओ? चलो गुड, आज की क्लास आती है, तुम खाना खाते खाते पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके. To replace capacitors in parallel, so पहले parallel का कर लेते हैं, ठीक है. Suppose we have n capacitors in parallel. A current, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीसरा, nth capacitor, okay. I1, I2, I3, IN, C1, C2, C3, CN. कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, ओके, एंड सेम और हमारे करंट्स ऐड होंगे, राइट. तो पैरेलल कैपेसिटर में हम KCL लगाते हैं and we get I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus IN, okay, and K, you know, is CK dV by dt. Therefore, substituting this in the above equation, we get I is equal to C1 dV by dt plus C2 dV by dt plus C3 dV by dt plus Cn dV by dt. तो करा क्या है, हमने कहा है पैरेलल है कैपेसिटर तो इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगी एंड टोटल करंट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स, और फिर उस करंट को हमने C dV by dt के फॉर्म में लिखा है और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. दिस इज इक्वल टू सिग्मा k is equal to 1 to n Ck dV by dt. dV by dt को कॉमन ले लिया, that is equal to C equivalent dV by dt. ठीक है.
here C equivalent is equal to sigma k is equal to 1 to n ck, which is nothing but c1 plus c2 plus c3 plus cn. ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? इसका इक्विवेलेंट बनेगा I C इक्विवेलेंट, वोल्टेज V है इसके क्रॉस, ओके, और दिस वैल्यू is equal to this. So, in words, the equivalent capacitance of n parallel connected capacitor is the sum of individual capacitances. The equivalent capacitance of n parallel connected capacitors is the sum of the individual capacitances. Okay, so अगर capacitors parallel में है तो उसका equivalent would be the sum of all these parallel capacitors. I'm sure you have done this in your schools. So now we'll do series connected n capacitors. N capacitors are connected in series. This is V, C1, V1. बोर हो जाओगे तो बता देना, जो स्किप करना होएगा बता देना. I'm doing it so that we are on the same platform. आगे कुछ भी करें तो अगर ऐसा है सीरीज कनेक्टेड, इसका इक्विवेलेंट ये हम क्यों पढ़ते हैं? So that we can use the equivalent capacitors to make our circuit analysis easy. Okay? To make our life easy. अभी यहाँ पर क्या है? सीरीज है तो same current flows, therefore charge on each capacitor is the same. Okay, and therefore series, therefore same current flows in the circuit, therefore charge on each capacitor is same. And so applying KVL to this loop, we get V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn, and V अभी इंटीग्रेट करके we have, ये हमने अभी किया है ना, Vk is equal to, किया है कि नहीं किया? हाँ, ये ला this equation. Okay, so Vk is equal to 1 upon Ck
T naught to T IT dt plus voltage of the capacitor at time T naught. अब ये सारे ऐड कर दो तो क्या आएगा आपके पास? Therefore, V is equal to 1 upon C1 T naught to T IT dt plus V1 T2 initial charge of C1 ठीक है plus 1 upon C2 T naught to T मैं कहीं गलती करूंगी तो बता देना plus V2 T naught plus 1 upon Cn T naught to T IT dt plus Vn T naught. अभी सारे C's इकट्ठे कर लो दैट क्योंकि ये तो सेम है so 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn T naught to T IT dt plus सारे कांस्टेंट्स इकट्ठे कर लो V1 T naught is the charge of capacitor C1 at T is equal to T naught. V2 T naught is equal to the charge of capacitor 2. Voltage of capacitor 2 at T is equal to T naught, and similarly plus Vn T naught. So this is equal to 1 upon C equivalent T naught to T IT dt plus Vt naught, where one upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn, okay, and the initial charge Vt naught across C equivalent is the sum of capacitor voltages or sum of the voltages of all the capacitors at T is equal to T naught. So V T naught is equal to V1 T naught plus V2 T naught plus Vn T naught. So, in series connected circuits, 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn. Okay, and for n is equal to 2, 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, or C equivalent is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. This is when two capacitors are in series. Okay? आता है ना सबको? Yes, ma'am. Good. Now we'll do circuit transients. अभी बस थोड़ा सा और पढ़ के फिर छोड़ दूंगी. खाना खाते रहो साथ साथ.
बस ये कैपेसिटर का करके, ये भी तुमने किया हुआ है. Okay, so whenever a circuit is switched from one condition to the other, there is a transitional period during which the branch currents and voltages across each component changes from the former value to the new value. This period is called transient period. After the transient period, again the circuit is in the steady state. Okay, so whenever circuit is switched from one condition to the other, current in the branches or the voltages across the branches, they change, okay, and from the former value to the new value. And this period is called the transient period. Okay, so whenever a circuit, बस एक RC circuit करेंगे और फिर बस, तो it will take half an hour maximum or 15 minutes. Whenever a circuit is switched from one condition to the other, there is a transitional period during which the branch currents and voltages across each component of the circuit change from their former values to the new ones. This period, when the things are changing, is called the transient. After the transient, has passed, the circuit is said to be in the steady state. ओके, अभी हम बहुत सिंपल सा इनिशियली चार्ज कैपेसिटर लेंगे. ओके, और उसमें केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे. ये इनिशियली चार्ज कैपेसिटर लिया, इसको डिस्चार्ज करेंगे थ्रू आर, और इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए केसीएल केवीएल लगाएंगे. फर्क सिर्फ इतना है कि when we apply KVL KCL to purely resistive circuits, result is in the algebraic equations. Now that we are applying it to the RC circuit, KVL KCL, we will get differential equations. Okay, so our object is to determine circuit response, to determine circuit response.
सर्किट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? दैट इज VT across कैपेसिटर. ओके, अगर हम ये रेजिस्टर लगा देंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो वोल्टेज will change with time across the capacitor. Okay, so since the capacitor is initially charged, we can assume V naught is equal to V naught. Okay, and with the अगर चार्ज है तो उसमें एनर्जी भी स्टोर्ड है, and the corresponding energy stored at t is equal to 0 is half C V naught square. Okay, up we'll apply KCL to this circuit. Okay, तो क्या बन जाएगा? ये IC है, ये IR है, तो IC plus IR is equal to 0. IC plus IR is equal to 0. Apply KCL to the circuit, right? So अभी IC plus IR is equal to 0, KCL, okay, and IC is equal to C dV by dt. By definition, therefore, C dV by dt plus I is V is equal to IR. So I is V by R. This is equal to 0, or dV by dt plus V upon RC is equal to 0. This is the first order differential equation. First order homogeneous differential equation. First order because derivative of V is of first order, and homogeneous because right hand side is 0. तुमने differential equations किए हुए हैं ना? So you know about the complementary function in the particular solution? Yes, no? Yes. ठीक है, तो इसका जो particular solution 0 होगा क्योंकि right hand side 0 है, and खाली transient state का solution होगा. Okay, so the equation has only the complementary function as its solution. Okay, so therefore we expect changes of the function to consist only of a transient. Okay, transient में ये change होगा, steady state में voltage 0 है. Okay, एक बार discharge हो जाएगा तो इसके across voltage 0 है. ठीक है, so now let us rearrange this. We get dV by V is equal to minus 1 upon RC dt. Integrating both sides. ये स्कूल में किया हुआ है ना? Yes, no? We get log V. कुछ तो बोल दो. कौन बोलेगा? अर्पिता. मैम ये नहीं किया. अच्छा, ये नहीं मैम डिफरेंशियल इक्वेशन किया है बट इसका नहीं किया ऐसे सर्किट का.
क्या नहीं किया? यहाँ तक किया है? इधर तक किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो बस अब ये तो समझ में आ गया ना जो मैंने किया है? Yes, ma'am. ओके, here log A is the integration constant. ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log v by a is equal to minus t by rc, and taking anti-log we get v by a is equal to e raised to power minus t by rc. हाँ, किसी को कुछ पूछना है? और vt is equal to a e raised to power minus t by rc. बस इस इक्वेशन के बाद इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर छोड़ दूंगी मैं, ठीक है? सो ये इक्वेशन तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद. नाउ इसको और थोड़ा सा फेमिलियर कर देते हैं. एट t is equal to 0, v naught is equal to a, and this is equal to v naught from initial conditions. And therefore vt is equal to v naught e raised to power minus t by rc. अब मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन यू पीपल आर फेमिलियर और नॉट? अभय सिंह, यस, नो? No, ma'am. नो. अच्छा, ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन, इवन इफ यू आर नॉट फेमिलियर, अब ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये कुछ नहीं Yes, आया? ma'am. हाँ आ हाँ गया. जी, सबको आ गया? आई वॉन्ट टू सी टू इट कि जिसको नहीं आया उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज है, और अगर आ गया है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ योर अदर फेलो स्टूडेंट्स जो गुस्सा करेंगे कि तेरे कारण और लंबी हो गई क्लास, ठीक है? अभी हम, मुझे ज़रा हेल्प करो, मैं देख रही हूँ मैं ही बोलती जा रही हूँ, कोई बोल नहीं रहा, ठीक है? तो आई थिंक आई विल टेक योर हेल्प. इस इक्वेशन में मुझे वी टी बाय वी नॉट की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है? एट t is equal to, let me say that RC is tau, time constant. R के यूनिट्स क्या है? ओम्स. ओम्स क्या होता है? V is equal to IR ना, तो V upon I. ओके, C के क्या है यूनिट्स? कूलम, ठीक है? इसके एक सेकेंड, इसके टाइम हो गया क्या नहीं हुआ? ये Q बाय T, Q is CV,
V is Q by RC का कैसे होएगा? This is ohm and C is capacitance. Okay. Q is CB. So this is Q by V. And V is equal to IR. So this is V by I. Okay. I is Q by T. तो सब कुछ कट गया. तो RC के यूनिट्स क्या है? टाइम के. राइट? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. तो इसलिए मुझे आप थोड़ा सा हेल्प करो, नहीं तो तुम सब पता चले कि मैं बोलती जा रही हूँ और तुम सो रहे हो. एट टी और एक कॉलम बनाते हैं वी टी बाई वी नॉट. अपने अपने कैलकुलेटर्स खोल लो. एट टी इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू आर सी. ओके, टाइम कांस्टेंट. सो ये क्या बन जाएगा? वी टी बाई वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ. So Vt by V naught is equal to e raised to power minus t by tau. Okay. So अब मुझे बताओ, when t is equal to tau, then what is Vt by V naught? When t is equal to tau. हाँ. 0.36 बन जाएगा e raised to power minus 1 हो जाएगा. अपने कैलकुलेटर में वैल्यू देख के बताओ, e raised to power minus 1 कितना होता है? Three-seven. कितना? 0.37. 36788. So 0.36788, जिसको हम दे देंगे 0.368. ठीक है. अब t इज इक्वल टू 2 टॉ के लिए बताओ कितना होगा? e raised to power minus 2. Some point 0.13534. That is 0.135. Okay. 3 tau? 0.049. 0.04979. You can say it's 0.50. 0.049. नहीं, एक सेकेंड है. 0.049 तो 50 ही हो गया. ठीक है. ओके. 4 tau? 0.01832. That is 0.018. 5 tau? 0.007. 0.00674. That is 0.007. So you can see from this table that voltage Vt is less than 1% of V naught after 5 time constants.
ओके 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में ये वी नॉट से लेस देन 0.01 v1 है. ओके लेस देन 0.01 v1 0.01 v naught. Okay, so this implies that the voltage Vt is less than 1% of V naught after 5 time constants. Okay. So we can say for all practical purposes that the voltage across the capacitor discharges after 5 time constants. Okay. Thus, this is an important result. Thus, for all practical purposes, look, it is a exponential discharge. Okay, तो theoretically fully discharged तो कभी भी नहीं होएगा. It will keep on approaching zero. Okay, लेकिन practically, okay, thus for all practical purposes, मतलब ideal case में तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन for all practical purposes capacitor is fully discharged आप बाद में देखोगे चार्जिंग में भी इतना ही टाइम लगता है. After 5 time constants. You are familiar with T is equal to RC is called time constant, na? You are familiar with this concept? Actually, टाइम पढ़ा ये पेपर आया. आई हैव नो आइडिया कि आप क्या पढ़कर आए हो. टाइम कांस्टेंट का आइडिया था आपको? टॉ इज इक्वल टू आर सी. Yes, sir. Okay, good. So, for all practical purposes, capacitor is fully discharged after 5 time constants. Okay? That is, it takes 5 time constants to reach its steady state. And for every time interval tau, the voltage is reduced to 36.8% of its initial value. Okay, so आप ये कह सकते हो कि after every time constant, okay, the capacitor discharges by or charges by 2/3 of its initial value. Okay, या final value. Charge हो रहा है तो 2/3 of the final, और अगर discharge हो रहा है तो 2/3 of the initial. इस चीज को अगर समझ में नहीं आया तो और ठीक से समझाते हैं. आपने देखा ना, V t plus tau is nothing but, मतलब after one time constant, it is nothing but Vt by E
बिकॉज कहाँ गया ये, इफ t इज इक्वल टू टॉ तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर -1. ओके, सो vt plus tau will become vt by e, and this is nothing but कुछ भी इनिशियल वैल्यू हो. ओके, आफ्टर टॉ वो इतना डिस्चार्ज करेगा, कहीं से भी शुरू करो. आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट वो 2/3 वैल्यू से डिस्चार्ज हो जाएगा. उसमें वैल्यू इनिशियल वैल्यू का 36.8% रह जाएगा. ओके, so this means smaller the time constant, the more rapidly the voltage will discharge. ऐसे है, ये है ये V और ये T, ये 1 RC, ये 2 RC, ये 3 RC, ये 4 RC, ये 5 RC. ठीक है, अगर कैलकुलेटर्स हैं तो आप 0.368 वोल्ट ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, और अगर कैलकुलेटर नहीं है, सपोज हम 9 वोल्ट से शुरू कर रहे हैं, कैपेसिटर 9 वोल्ट से चार्ज है. ठीक है, तो आफ्टर एवरी वन टाइम कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 2/3 डिस्चार्ज हो जाएगा. दिस इज ऑलमोस्ट 1/3 ना, 0.33 इज 1/3. ओके, तो हम मान सकते हैं कि 1/3 रह गया वोल्टेज, दैट मीन्स 2/3 डिस्चार्ज हो गया. तो अगर हम 9 से शुरू करेंगे, ओके, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? 2/3 ऑफ 9 कितना होता है? 6 वोल्ट्स. 6 वोल्ट्स डिस्चार्ज कर जाएगा. 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, अब हमारे कितने रह गए? 3 वोल्ट. ओके, फिर से एक टाइम कांस्टेंट में इतना डिस्चार्ज कर जाएगा, मतलब 2 वोल्ट से डिस्चार्ज कर जाएगा, तो हम रह जाएगा 1 वोल्ट. फिर हमारे पास 1 वोल्ट रह गया. ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट में 2/3 से डिस्चार्ज हो जाएगा. 2/3 से डिस्चार्ज हो जाएगा तो कितना बचेगा? देख लो, 0.05 9 सा ये 0.0, मतलब ये 1 है ना, तो 0.33 के आसपास मेरी अप्रोक्सीमेशन में. और आप अगर ध्यान से करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, 0.45, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन बड़ी क्रूड लिया हुई है. फिर उसके बाद 4th में और उसका 2/3 डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू रह गई उसका 1/3 आ जाएगा. फिर 5th में जो वैल्यू आई उसका 1/3 रह जाएगा. और ये आपका ग्राफ बन जाएगा एक्सपोनेंशियल. ठीक है, अगर मेरा टॉ इज इक्वल टू RC, ये टाइम कांस्टेंट छोटा है, ओके, दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R and C in the circuit ना, in the circuit. If RC is small, तो ये मेरा 1 RC 2 RC
ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो ये और स्टीप बन जाएगा। और अगर मेरा आरसी बड़ा है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देर से डिस्चार्ज होएगा। सो स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट, smaller the time constant tau, the more rapidly the voltage decreases. This is important. समझ में आ रहा है? That is, faster is the response. जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। Whether the time constant is small or large, the circuit reaches steady state in 5 time constants. 5 time constants में सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाता है। मतलब डिस्चार्ज हो रहा है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और चार्ज हो रहा है तो फाइनल जिस वैल्यू पे आना है उस पे आ जाएगा। ओके अभी एक्सपेरिमेंटली अगर करना हो, टाइम क्या हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, अभी 2-3 मिनट में छोड़ देती हूँ, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटली एक करना है, हमें अगर निकालना है टाइम कांस्टेंट, ओके, और टाइम कांस्टेंट है माइक्रो सेकेंड्स में, तो हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में सीआरओ में इसका देखेंगे VT/V0, ओके। और क्या करेंगे, इसकी जो इनिशियल स्लोप है ना, उस पे टेंजेंट ले लेंगे एट t = 0। जो स्लोप है उस पे टेंजेंट ले लेंगे, और वो जहाँ पर भी x पे क्रॉस कट करेगा दैट इज 1 tau। इसको इक्वेशन से देखना है तो वी नो VT/V0 is e⁻t/τ. So ddt of VT/V0 at t is equal to 0 would be equal to -1 upon tau e⁻t/τ at t is equal to 0। तो ये देख रहे हैं हम, नेगेटिव स्लोप आ रही है, ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट होएगा वो आपको at t is equal to 0 it will be -1 upon tau. Okay, so time constant can be obtained from the initial rate of decay, that is initial slope. Okay, अब मैं देख लूँ कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं रह गया मेरा, कोई है एक आधी छोटी सी चीज़। हाँ, एक
छोटा सा रह गया. अगर मैं कांस्टेंट करंट सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज कर रही हूँ, ओके, this is the voltage of the capacitor, okay, then मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? voltage of the capacitor versus time. मैंने ये करवाया तो है but in different constant, straight line, okay, the output is a straight line. ये सीधा, ये for large I and this is for small I. However, if we are charging the capacitor with the voltage, say 10 volts, ये R लगा दिया और ये C लगा दिया. बेटा अगर मैं ऐसे बना रही हूँ ना ये सर्किट्स, इसका मतलब है this implies 10 volts R, ये आपको मालूम है या नहीं? C. Actually what this and this, they are same. यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं यहाँ 10 volts लिख रही हूँ, I am assuming whenever you don't show the look, it is always potential difference. So whenever you don't tell कि दूसरा क्या है, तो it is always taken कि it is with respect to ground, कि दूसरा बैटरी का टर्मिनल ग्राउंड से है. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिकली ये सर्किट है और ऑन बोर्ड और कॉपी वी मेक दिस सर्किट. बोथ आर सेम. When we write 10 volts here, it means it is with respect to ground. Same here. When I say that the current is flowing here, हवा में नहीं है. करंट सोर्स का जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है. ओके, सो लूप हियर इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज लूप इज यहाँ पर ऐसे ये करते हैं टू मेक द थिंग्स नीट. ओके, it is a convention. So whenever we say 10 volts is a potential at this point, it is taken into, it is a convention that we know that it is with respect to some common point. Normally that common point is a ground. Okay, so whenever we are charging with the voltage source, हमारा चार्ज कैसे होगा? क्योंकि हमारा करंट सेम नहीं रह रहा, क्योंकि इस जैसे जैसे चार्ज होगा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ आर. तो इसलिए करंट कम होता जाएगा. करंट कम होता जाएगा तो वो चार्जिंग धीरे हो जाएगी. तो इसलिए इफ दिस इज 10 volts, ओके, तो कैपेसिटर की चार्जिंग जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सपोनेंशियल हो जाएगी. ठीक है. सो इन 1 RC कैपेसिटर विल go 63% of the way towards its destination. जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, जो भी वोल्टेज उसको कवर करना है, जितने भी वोल्ट्स कवर करना है, उसका हर एक आरसी में वो 63% ऑफ इट्स टारगेट करेगा. ओके, और 5 आरसी सी नहीं 5 आरसी में, आई थिंक इट इज हाई टाइम वी शुड स्टॉप. वो इट विल चार्ज टू ग्रेटर देन 90, it will cover 99%, more than 99% of its target. Okay, और V capacitor क्या हो जाएगा? It will be V applied 1 minus e raised to power minus t by RC, charging equation
of a capacitor. ये मालूम है ना? Yes, no. आज जो पढ़ाया उसका कितना % आपको आता था? 100%? 20%. Take your screenshot. हाँ? कितना आता था? And 60 to 65. 60, 70, 90. कितना आता था? मतलब क्लास, आज की क्लास फ्रूटफुल थी या नहीं? इतनी देर आपको रुकवाया, मैंने ले लिया है. थैंक यू सो मच. नाउ एंजॉय. गुड नाइट. Good night. You can leave the class. Thank you. Good night, ma'am. Good night. ये बच्चे लगता है सो रहे हैं. अर्पिता एज यूजुअल. अर्पिता, गौरव, महीर, रोहित, माहौर. रोहित माहौर ने दो जगह वो करके लॉग इन करके सो रहा है. सूर्य प्रताप. बच्चे क्लास खत्म हो गई है. अर्पिता, महीर, रोहित, सूर्य.